आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24। मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो उसके लिए आप बड़े ख्वाब देखिए, लेकिन जिस ख्वाब की बात पूर्व राष्ट्रपति व मिसाइल मैन अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम ने की थी, वो ख्वाब अंधेरे में सोते हुए आंख बंद करके नहीं बल्कि दिन के उजाले में आंख और दिमाग को खोलकर देखने की बात करते थे। यानी कि अपनी सोच को कुछ बड़ा हासिल करने वाला कीजिए और उस सोच को अमली जामा पहनाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ और लगन के साथ उस प्रोजेक्ट पर काम कीजिए, तभी आप कुछ बड़ा हासिल कर पाएंगे। इसी बड़ी सोच के जरिए मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम ने पूरी दुनिया में देश का नाम ही नहीं ऊंचा किया बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी में दुनिया की टॉप कंट्रीज की कतार में भारत को लाकर खड़ा कर दिया था और पूरी दुनिया में देश में बनी मिसाइल का लोहा मनवाया था। आज वही देश तरक्की कर रहे हैं और अपने देश की सरहदों की सुरक्षा कर पा रहे हैं, जो साइंस और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। भारत रत्न व मिसाइल मैन के सम्मान में एपीजे अब्दुल कलाम ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल नासिर नसीर ने पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे कलाम की 93वीं बर्थ एनिवर्सरी पर एक सेमिनार का आयोजन लामाटीनियर बॉयज कॉलेज में किया, जिसमें स्टूडेंट्स के अलावा चीफ गेस्ट जस्टिस राजेश सिंह चौहान, स्पेशल गेस्ट चीफ सेक्रेटरी रविंद्र नायक, SMA रिजवी, सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार इंद्रजीत सिंह, नगर आयुक्त, एजुकेशनिस्ट अफजाल अहमद सिद्दीकी, शाहिंदा इरशाद, प्रिंसिपल फर्स्ट एकेडमी ने अपने विचार रखे। ये बहुत बड़ा मौका है और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी जब हम उनको याद कर रहे हैं आज, तो इंडीड उनकी जो बेस्ट क्वालिटीज और बेस्ट उनकी जो थॉट्स हैं उनको हमको अडॉप्ट करना चाहिए। All of you, I see many students sitting over here, so this program is basically meant for them also. We have reached to a grown-up age, but you have to learn a lot from the life of Dr. APJ Abdul Kalam. He was, as Dr. Saab said, such a thorough gentleman that he never felt that I am President of India or I am a missile man. He was very humble and he was for the humanity. He never thought of anything that he is a superman or he is a missile man. He considered himself to be a common man, a gentleman. That is why he has a great place in our hearts. Never thought of thinking anyone else inferior to him, whether it was his servants or his households, everyone was equal to him, a human being. That was his message to everyone. हमारे दरमियान में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के फाइनेंस सेक्रेटरी सीनियर IAS जनाब SMA रिजवी साहब मौजूद हैं। मैं बसत एहतराम दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब रिजवी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। सबसे पहले मैं इस ख़ास मौके पर आप लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाह रहा हूँ कि हम लोग एक अजीम शख्सियत की याद में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सबको एहसास होगा कि किसी अजीम इंसान, ग्रेट पर्सनालिटी को याद करने के लिए जब हम लोग इकट्ठा होते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है। मैंने महसूस किया है कि ज़्यादातर उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ यादगार लम्हात का तज़किरा लोग करते हैं, कुछ किताबों से पढ़ के उनके लाइफ के बारे में कोई चीज़ बता देते हैं। मैं यहाँ पर एक दूसरी चीज़ पेश करना चाह रहा हूँ। तो फंडामेंटल इशू क्या है? किसी इंसान के बारे में जानने का दो तरीक़ा है। एक तो उसकी जीवनी है, उसको बायोग्राफी कहते हैं, और एक है उसकी जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल। तो जीवनी पढ़ना मैं समझता हूँ कि उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना उसकी जीवन शैली के बारे में जानना। क्योंकि हम अगर किसी को, किसी अच्छे इंसान के बारे में कहते हैं कि इनके बताए हुए रास्ते पर चलें, तो हम उनके जीवन को कॉपी करने के लिए हम मोटिवेट नहीं किया जाता,
बल्कि मोटिवेशन इस बात के लिए होता है कि हम उनकी लाइफ स्टाइल में कौन सी ऐसी विशेषता थी जिसे हम अपना सकते हैं। मैं एक बहुत ही जो प्रोमिनेंट उनकी लाइफ स्टाइल है, एक होता है शिक्षक। शिक्षक होना, टीचर होना एक प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन कोई खास बात नहीं है, कोई भी टीचर हो सकता है, लेकिन किसी की अगर लाइफ स्टाइल टीचिंग की है, यानी जो वो सीखता है वो दूसरों को सिखलाने की कोशिश करता है। जैसे कलाम साहब ने टीचर रहे और मरते दम तक टीचर रहे, ये उनका दरअसल पर्सनल एट्रीब्यूट है, ये सीखने वाली चीज है। APJ Abdul Kalam as a patient in 2006. Yes, my boss was a good friend of him, so we went to see him in his house in 2006-7 probably for some of his shoulder complaints. Such a nice, thorough, down-to-earth gentleman, and that was, I mean, lesson for me to see him and examine him as a patient. Such a nice, thorough. उन्होंने हमारे लिए अपने हाथ से चाय बनाई. Yes, he was such a thorough gentleman, and then he sat for about 45 minutes with us, talking about his experience from his student days and his till the time he was there. And वो एक लेसन है शायद हम सब के लिए, हमारी लाइफ के लिए. and मेरे ख्याल से it changed me a little. मतलब वो मुझसे काफ़ी, मैं उनसे मुतासिर हुआ था मिलने के बाद. So it was an honor. मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे आके और इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और इतनी डिस्टिंग्विश्ड गैदरिंग के साथ. एंड थैंक यू सो मच नासिर भाई फॉर दिस. थैंक यू. और एजुकेशनल एकेडमी है, फॉस्टर एकेडमी, उसकी प्रिंसिपल मोहतरमा शाहिंदा इरशाद साहबा मौजूद हैं. मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं. Good evening, all the dignitaries present here. Good evening, sir. Whatever is said on Dr. APJ Abdul Kalam is less, but still I would like to pay light on the life of Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam's life is a remarkable story of perseverance, humility, and dedication to serving his country. Born into a humble family of Rameswaram, Tamil Nadu, Kalam faced many challenges, including financial hardships, but he didn't give up. However, he had an unwavering passion for learning. And due to this passion, I would like to say and stress, at whatever post we are, whether we are the principal, teachers, or sitting at any other post, at any place, we should always remember that at none of the time we should be affected that we know everything and we should stop our learning. Every time we should be update ourselves and continue with our learning at any phase of the life. He worked hard to fund his own education, eventually become prominent scientist and playing a key role in India's missile and nuclear programs. One of his most inspiring moments came when he led the successful test of the Agni and Prithvi missiles. Despite numerous failures and setbacks, Dr. APJ Abdul Kalam and his team never gave up. He taught us that failure is not the end. And I would like to stress on the word end. The end word itself says enthusiasm never dies. I'm not saying was, who is a missile man, President of India, great scientist, a great human being, a person down to the earth, despite having so many achievements, which was not possible to anyone to achieve in one life, but he was having those achievements. Even then, he was down to the earth. He remained a great student besides a great teacher. His view was that one should remain a student in whole life, what Mr. Rezvi has said.
He was teacher, this was the fact. But he was a student, this is also one of the facts, because when you feel yourself a student, your habit to remember, to learn, to know something always with you. और आइए मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ मोहतरमा सादिया साहिबा से। Good evening, all the dignitaries present on the stage and everyone present in this hall. As we all know that today we are gathered here for the seminar remembering a visionary celebrating the life and legacy of Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam, this name doesn't require any introduction. Widely referred as People's President, Mr. Kalam was the 11th President of India. He was a visionary, a statesman, and in true sense, a Bharat Ratna. He lived his life in such a manner that would inspire the generations to come. He is a source of inspiration not only for Indians, but for the people of the whole world. On one hand, due to his intimately involvement in India's civilian space program and military missile development efforts, he is called the Missile Man of India. And on the other hand, in 1998, he worked with the cardiologist Soma Raju and developed a low-cost coronary stent named the Kalam Raju stent. In 2012, the DO designed a rugged tablet computer for healthcare in rural areas, which was named Kalam Raju tablet. These diverse aspects of his life shows his vision and care for the country. He not only thought about the military strength and space program of India, but also tried to improve the healthcare for rural India. Born in a Muslim family, Mr. Kalam grew up watching his father, Mr. A.P. Abdul, who was an imam of a mosque, discussing the local issues with the head priest of Ramnath Swami Hindu Temple, Mr. Bakshi Lakshmana Sastri, and a church priest every evening with tea. Such early exposure convinced Mr. Kalam that answers to India's multitudinous issues lay in the dialogue and cooperation among the country's religious, social and political leaders. कार्यक्रम के अंत में अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वालों को बुके और मेमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया।